Assalamu alaikum everybody. Welcome back to my channel Rapid Revision. Today's video is from AS level accounting, and this particular question is on scheduling of non-current assets. So this basically is a question on depreciation, and you have to prepare a schedule of non-current assets in one of the parts. The question here says Helen provides the following information for the year ended 31st May 2013. So you guys should know that if her year ends on 31st May 2013, it starts on 1st June 2012. That's the start of the year, and the end of the year is 31st May 2013. And they have given you information of non-current assets. So there are three types of non-current assets in this particular question. There's buildings, there's machinery, there's motor vehicles, and then they've given you the total. They've given you cost of buildings, machinery, and motor vehicles. They've given you accumulated depreciation at 31st May 2013, which means this is the total depreciation at the end of 31st May 2013. The total depreciation of each of these categories of non-current assets, and then they have given you net book values at 31st May 2013. They've given you depreciation charged for the year. So this basically, these amounts represent the amount that they have charged in the income statement for each of these non-current assets. So for buildings, they've charged $40,000. However, they have taken three zeros in common. So we are also going to take the three zeros in common in our calculations. In the calculations in the next few parts. Then they're saying a full year's depreciation is charged in the year of purchase, and no depreciation is charged in the year of disposal. This is important because this is the policy that we need to follow. Buildings and machinery are depreciated using the straight line method, and motor vehicles are depreciated using the reducing balance method. Then they're saying explain why Helen needs to depreciate her non-current assets. So whenever you've been given this kind of a question, you have to mention the principles that are applied, the accounting principles that are applied to depreciation. So in this case, I have already written the answer for you. So you basically you can write the answer around the same point that I have mentioned. Depreciation is the loss in the value of the non-current assets over a period of time. The business charges depreciation to apply the principle of accruals and matching. If the non-current asset helps the business generate revenue for one period, the loss in the value of the non-current asset should be accounted for in the same year. The business also applies the principle of prudence by depreciating non-current assets, which says that profits and assets should not be overstated. So, when you charge depreciation, you basically record an expense in the income statement, and that basically that expense is going to reduce your profit. I mean, it's going to prevent your profits from being overstated. Similarly, in the statement of financial position, you would value your non-current assets at net book value, because even if you look at the statement of financial position values that they have given you, these are basically at 31st May, we have valued buildings at $1880, sorry, $1880 dollars, yes, and three zeros are common. For machinery, we have taken $1,200 as our net book value, and for motor vehicles, $400 is our net book value. So you have to, so when we actually apply depreciation, and when we actually account for depreciation in the statement of financial position, we record our non-current assets at net book value, not their original cost. And net book value is obviously less because net book value comes out of cost. Like whenever you are subtracting accumulated depreciation from cost, you basically find out the net book value, and net book value is obviously a lower value as compared to the cost. So in this way, you are also not overstating your non-current assets in the statement of financial position, and you're not overstating your profits. So we are basically complying with the principle of prudence. Then they're saying state three causes of depreciation of motor vehicles. So depreciation because of usage of motor vehicles. There's physical deterioration of your motor vehicles, that is called wear and tear. You either write wear and tear or you write physical deterioration. It's one and the same thing. Obsolescence, there's this the motor vehicles basically
lose value due to obsolescence also. And there is technological innovation. So in case of motor vehicles specifically, there are new models of cars also coming up every year. And every other time you have something new coming up in technology, so that also leads to depreciation of non-current assets. In the next part, they are saying calculate the rate of depreciation used by Helen. So they've given you the methods. Yes, they have said that we've used straight line method for buildings and machinery, and for motor vehicles we've used the reducing balance method. But they are saying calculate the rate used by Helen to depreciate each class of non-current assets. So we have to basically calculate the rate for all these three of the non-current assets. So it's very easy. So depreciation charge for the year for buildings is $40, and the total cost of buildings is 2000. So when you divide these both, so amount of depreciation divided by the cost. So basically, how in the straight line method, how do you actually calculate depreciation? It's cost multiplied by rate, and that gives you the amount of depreciation. So cost multiplied by rate gives you the amount, but we know the amount and we know the cost, but we need to find out the rate. So 40 divided by 2000 into 100 will give me 2%. 2% is the rate for buildings, and this is for buildings, so I write buildings over here. The other non-current asset here is buildings, and then machinery is also depreciated using the straight line method. So the charge for the year for machinery is 400 and the cost is 2000. So what I'm going to do is I'm going to write here 400, that is the amount of depreciation, divided by cost, the cost of the non-current assets, that is 2000 multiplied by 100, which will give me 20%. So this is going to give me 20%. And this is for machinery. Machinery is depreciated by 20% straight line method. And then for the third one, that is the motor vehicles. So for the motor vehicles, I have used the reducing balance method, and I'm going to calculate the depreciation for you. But depreciation charge for the year is 100 and the cost is 700. But you guys know that in case of RBM, the formula for RBM is cost minus accumulated depreciation multiplied by rate, which gives you the amount of depreciation. So this is going to give you the amount of depreciation, the expense for the current year. So the expense for the current year is $100, that I know already. So what I need to do is, cost minus the cost is 700, but accumulated depreciation, this 300 basically includes $100 of the current year. So this 300 includes the $100 of the current year. However, this is basically 300 is accumulated depreciation at the end of the year. So at end of year, accumulated depreciation is 300. So before we charged 100 for the current year, the accumulated depreciation at the start of the year was 200. So accumulated depreciation at start was 200. Accumulated depreciation at end is 100, because 100 is what we've charged during the year for motor vehicles in the income statement. Income statement is now called statement of profit and loss in A-level accounting. So even for O-level, they're going to change the name. In the specimen paper 2027, you will see that there is a statement of profit and loss. The word statement of, basically the statement of profit and loss is used in place of income statement. What I'm trying to say here is that accumulated depreciation at the end of the year is 300 and accumulated depreciation at the start of the year was 200. So basically, when we calculated the depreciation, the cost at the start of the year was 700. So the cost was 700 and the total depreciation at the start of the year was 200. So net book value at the start of the year was 500 and the charge for depreciation is 100 multiplied by 100. So this is basically going to tell me charge for the year divided by net book value. So net book value will be 500 multiplied by 100 will give me 20% reducing balance method. So this is going to be 20% reducing balance method.
but the percentage here is 20%. But you guys know that if we already had 20%, what we have done would be 700 cost of the motor vehicles minus 200 accumulated depreciation at the start of the year, that is 200 multiplied by 20% would have given us $100. So this is how we actually calculated 700 minus 200 multiplied by 20% gives us $100. But you guys need to understand that 300 includes the charge for depreciation for the current year. So you guys have to work backwards and calculate the accumulated depreciation at the start of the year. तो नॉर्मली भी हम जब सोल ट्रेडर का क्वेश्चन करते हैं तो जो ट्रायल बैलेंस में हमें accumulated depreciation दी हुई होती है वो accumulated depreciation at the start of the year होती है और जब हम reducing balance method लगाते हैं तो हम cost at the start of the cost of non current assets at start of the year और उसमें से हम total depreciation minus करते हैं उसके ऊपर rate apply करते हैं reducing balance method का तो हमें उस साल की depreciation पता चल जाती है तो इसीलिए हमें क्योंकि यहाँ पे साल की depreciation पता है और accumulated depreciation at the end of the year पता है हमें work backwards करके we have to calculate accumulated depreciation at the start of the year so that you know the net book value at the start of the year पे percentage apply हुई है net book value at the end of the year पे percentage apply नहीं हुई है net book value at the start of the year पे percentage apply होती है in case of RBM to basically net book value at the start of the year पे percentage apply होती है in case of RBM so that you know we can calculate depreciation expense for the year. सो एक्सपेंस फॉर द ईयर तो हमें दिया हुआ था यहाँ पे accumulated depreciation at the end of the year दी हुई थी हमने वर्क बैकवर्ड्स करके accumulated depreciation at the start of the year निकाली और net book value at the start of the year निकाली so we got percentage of RBM in this case which the rate that the business has used in this case is 20% RBM. Okay, the next part says here explain why buildings is usually depreciated using the straight line method while motor vehicles are usually depreciated using the reducing balance method. अगर आप ये सवाल देखें यहाँ पे मशीनरी को मैंने स्ट्राइक ऑफ किया हुआ है क्योंकि अगर आप लोग मार्किंग स्कीम देखें तो उन्होंने यहाँ पे in the marking scheme they've mentioned about buildings that buildings are basically depreciated using the straight line method. For machinery RBM is more appropriate and over here in this case they have used the straight line method for machinery as well but for machinery RBM is more appropriate because even in case of machinery machinery is more efficient in the early years. But what you need to write here is that assets like motor vehicles are more efficient in the early years of usage and they lose more value in the early years. So a greater depreciation is charged in the early years of usage. In the later years, the expense of depreciation reduces because in case of RBM एक्सपेंस ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो हर साल कम होता रहता है तो एक्सपेंस ऑफ डेप्रिसिएशन शुरू के सालों में ज़्यादा होगा और एक्सपेंस ऑफ डेप्रिसिएशन लाइक बाद के सालों में जो होगा वो थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा तो होता ये है कि जो मोटर व्हीकल्स टाइप के जो एसेट्स होते हैं वो शुरू के सालों में बहुत एफिशिएंट होते हैं तो उनके ऊपर कोई रिपेयर कॉस्ट हमें इनकर नहीं करनी पड़ती लेकिन बिकॉज यू नो हमने उनको बहुत ज़्यादा जब यूज़ कर लिया तो आखिरी के सालों में जो उनके जो लेटर ईयर्स होते हैं उनमें यू हैव टू ऑल्सो incur the repair cost for motor vehicles. तो repair cost के आने की वजह से repair cost एक expense आ जाता है and then there is a small amount of depreciation, a smaller amount of depreciation. However, in the early years we just have a bigger amount of depreciation and no repair cost. Okay. However, assets like buildings lose value more evenly over its useful life. Also, building gives benefits more consistently over its useful life. Hence, the straight line method would be more appropriate. तो buildings जो हैं उनमें कोई technology वाला factor नहीं होता. However, motor vehicles में एक technology वाला factor होता है and motor vehicles is like it's like a machine. Okay, so motor vehicle again car is a machine, right? However, buildings have a structure and buildings are constructed, but उनकी जो depreciation होती है वो कोई एकदम से दे ऐसा नहीं है कि एकदम से they will like in the beginning years they are very they give the business a lot of benefits and then in the later years they lose value like cars लेकिन इनकी जो benefit होता है वो more or less same होता है in every year
which is why we use the straight line method for buildings. Okay, in the next part they are saying, okay, this is now the non-current asset schedule. If you look at this looks like, okay, this looks like very difficult, but trust me, it's just like the T account that we prepare for non-current assets and for depreciation. पहले हमारे पास जो सेक्शन दिया हुआ है इस शेड्यूल में वो कॉस्ट का सेक्शन है, राइट? तो अब हम कॉस्ट के सेक्शन को पहले सॉल्व करेंगे एंड दिस इज गोइंग टू बी इजी, क्योंकि कॉस्ट सेक्शन इज इजी, कॉस्ट अकाउंट भी आसान होता है जो नॉन करंट एसेट का कॉस्ट अकाउंट होता है. ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मई 2014. अच्छा, 31 मई 2014 मीन्स कि जो अभी तक हम जो सवाल कर रहे थे वो फॉर द ईयर एंडेड 31 मई 2013 था. अब ये जो है 31 मई 2014 के लिए विच इज़ द नेक्स्ट ईयर, सो दैट स्टार्टेड ऑन 1 जून 2013 को स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और वो 31 मई 2014 पे एंड हो रहा है. एंड देन दे आर सेइंग हेलेन बॉट न्यू मशीनरी, तो उसने नई मशीनरी खरीदी कॉस्टिंग 720,000. सो दिस इज एन एडिशन. ओके, तो अगर आप देखें यहाँ पे बिल्डिंग्स, मशीनरी और मोटर व्हीकल्स के ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए, दीज आर द ओपनिंग बैलेंसेस. तो बैलेंस एट 31 मई 2013 मीन्स बैलेंस ब्रॉट डाउन एट 1 जून 2013, ठीक है. यही बैलेंस जो 31 मई 2013 की एंड पे होगा वही आपका 1 जून 2013 पे होगा. तो बिल्डिंग का बैलेंस है 2000, मशीनरी का बैलेंस है 2000, अगेंस्ट मोटर व्हीकल्स का बैलेंस है 700, और इन्होंने आपको टोटल दिया हुआ है. अब इन्होंने यहाँ पे जो नई मशीनरी खरीदी है 720,000 का, यहाँ पे उसको प्लस 720 हमें करनी पड़ेगी क्योंकि हमने नई खरीदी है. एडिशंस मीन्स जो हम नए नॉन करंट एसेट्स लाए हैं, ठीक है. देन दे आर सेइंग एंड सोल्ड ओल्ड मशीनरी, तो पुरानी मशीनरी बेची विच हैड अ कॉस्ट ऑफ 160,000. The old machinery had been bought on 1st December 2011. So they have given you this so that you know this helps you calculate the total depreciation. Total depreciation calculate करने के लिए इन्होंने आपको डेट दी हुई है, किस डेट को हमने खरीदा था ये. लेकिन यहाँ पे क्योंकि कॉस्ट की जब कैलकुलेशंस होती हैं तो उसमें हम डिप्रिसिएशन कभी भी नहीं लिखते, ये तो पता है आप लोगों को. तो जो डिस्पोज्ड ऑफ मशीनरी है ना, जिसको हमने डिस्पोज ऑफ किया, जिसको द ओल्ड मशीनरी, उसकी कॉस्ट 160,000 थी ना, तो 160 यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे बिकॉज ये डिस्पोज ऑफ हो रहा है, सही है. तो 160 हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बिकॉज उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 160 थी. तो अगर आप लोग जो है वो मशीनरी का कॉस्ट अकाउंट को देखें तो बैलेंस ब्रॉट डाउन इज 2000, और जो हमने नई खरीदी है वो हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं ना, हम हमेशा नया नॉन करंट एसेट जो है वो डेबिट पे रिकॉर्ड करते हैं, एंड जो डिस्पोज्ड ऑफ नॉन करंट एसेट होता है उसको हम क्रेडिट पे रिकॉर्ड करते हैं. तो यहाँ पे डिस्पोजल लिखते हैं ना बेसिकली, तो डिस्पोजल लिखते हैं एंड यहाँ पे 160 लिखेंगे. तो जब हम यहाँ पे बैलेंस कैरिड डाउन निकालेंगे तो एक्चुअली में हम यही कर रहे हैं ना, we are basically adding the first two values like 2000 plus 720 minus 160 is what we are doing, ठीक है. तो यही चीज जो है वो हम टी अकाउंट में भी करते हैं. अगर हम मशीनरी का कॉस्ट अकाउंट बना रहे होते तो हम यही करते, सही है. तो मशीनरी की जो एंडिंग की वैल्यू आपकी रह जाएगी वो हो जाएगी 2560. ये बैलेंस हो जाएगा लास्ट बैलेंस कैरिड डाउन एट 31 मई 2014 पे ये हमारा बैलेंस हो जाएगा, ठीक है. 31 मई 2014, इसको थोड़ा अलाइन करके लिख देते हैं 2560. Now for motor vehicle, they are saying Helen bought a new motor vehicle. उसने नई motor vehicle खरीदी है. She traded in an old vehicle valued at 40,000 and paid the balance of 160,000 by check. अच्छा, तो उसने क्या किया है कि एक पुरानी मोटर व्हीकल दी है, सो ओल्ड मोटर व्हीकल उसने दी है, सो वो बेची है, सही, सेल की है. तो ये ओल्ड मोटर व्हीकल सेल की है और इसके एक्सचेंज में, सो शी बेसिकली एक्सचेंज्ड इट फॉर अ न्यू मोटर व्हीकल, सही है. न्यू मोटर व्हीकल के लिए उसने एक्सचेंज किया है. तो पुराने मोटर व्हीकल के लिए उसको जो अलाउंस मिल रहा है वो 40,000 मिल रहा है. तो इसका मतलब पुराने मोटर व्हीकल की जो खरीदने वाले ने उसकी वैल्यू 40,000 लगाई है और इसका बैलेंस वो 160 पे कर रही है खुद से. तो इसका मतलब न्यू जो मोटर व्हीकल वो खरीद रही है उसकी कॉस्ट 200,000 है. उसने नई मोटर व्हीकल $200,000 की खरीदी है. बेसिकली एक्सचेंज ट्रेड इन में ये होता है कि हम जो है वो पुराना जो बेच रहे होते हैं ना उसके लिए पैसे नहीं लेते,
हम उसके बदले नया नॉन करंट एसेट ले लेते हैं, तो जो पुराना बेच रहे होते हैं तो ऑब्वियसली वो कम प्राइस में सेल होगा, राइट। तो इस केस में वो 40,000 का सेल हो रहा है क्योंकि उन्होंने अलाउंस हमें वैल्यू अलाउंस की दी है 40,000, और फिर जो है हेलन ने ऊपर 160,000 और पे कर दिए। तो इसका मतलब जो नई मोटर व्हीकल थी उसकी कॉस्ट थी 200,000, तो इसका मतलब एडिशंस में मुझे 200 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, the trade in vehicle had a cost of 100,000 and had a net book value of 160,000 at the date of disposal. अच्छा, इसकी कॉस्ट अगर 100 है और नेट बुक वैल्यू, तो नेट बुक वैल्यू का फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट बुक वैल्यू ना। तो अगर नेट बुक वैल्यू 60 है तो इसका मतलब अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन इसकी जो है वो 40,000 थी, इसीलिए नेट बुक वैल्यू जो हो गई वो 60 हो गई। तो इसका मतलब उसकी कॉस्ट तो 100 है ना, तो हम यहाँ से 100 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि डिस्पोजल को हम हमेशा कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं इन द कॉस्ट अकाउंट, राइट। तो ये बेसिकली कॉस्ट की ही कैलकुलेशन है ना। तो 700 प्लस 200 माइनस 100 will give me 800 which is my balance carried down for motor vehicles at the end of the year, that is 31st May 2014 पे, ठीक है। अब इन्होंने कहा है a new building costing 1 million, so 1 million is 1,000,000,000, सही है, 1 मिलियन में 6 जीरोज होते हैं, तो वो कंप्लीट हुई है ड्यूरिंग द ईयर, तो दैट मीन्स दैट इज एडिशन ऑफ बिल्डिंग्स, बट वी डोंट हैव एनी डिस्पोजल, तो हम उस पर डैश लगा लेते हैं। तो इसका मतलब बिल्डिंग्स का एंडिंग वैल्यू हो जाएगी $3,000। सो बेसिकली 3 मिलियन है, लेकिन 3 जीरोज हमने कॉमन लिए हैं। तो जब हम इसको ऐड करेंगे, इस पूरे इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे हॉरिजॉन्टली, तो हमारी सारी वैल्यूज़ को बेसिकली, तो हम इसको भी करते हैं, एक मिनट, इसको भी करेंगे, इसको इन तीनों को भी ऐड करेंगे। तो 1000 प्लस 720 प्लस 200 विल गिव मी 1920, and 160 and 100 is basically I'm subtracting 260, and when I also add the total wala row, मतलब balances वाला रो, जो कि बैलेंस at 31st May 2014 है, इसको हम जब ऐड करेंगे तो हमारा आंसर इसका आएगा 6360। So 6360 is my cost of non-current assets, buildings, machinery and motor vehicle at the end of 31st May, बेसिकली एट 31st May 2014। 31st May 2014 को मेरी बिल्डिंग्स की कॉस्ट 3000 है, मेरी मशीनरी की कॉस्ट 2560 है, और मेरी मोटर व्हीकल्स की कॉस्ट 800 है, और टोटल इन तीनों की मिला के जो कॉस्ट है वो 6360 है, ठीक है। अब आ जाता है डिप्रिसिएशन वाला पार्ट, जिसमें हम कैलकुलेशंस करेंगे, एंड आई विल हेल्प यू विद द कैलकुलेशंस। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द डिप्रिसिएशन थिंग। सो डिप्रिसिएशन, अब जो डिप्रिसिएशन शेड्यूल है वो बेसिकली डिप्रिसिएशन का टी अकाउंट है, सो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का टी अकाउंट है। तो अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन at the start of the year is 120 for buildings, 800 for machinery and 300 for motor vehicles। और अगर हमें पता हो, हमने स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर बिल्डिंग्स हमने कितना परसेंटेज यूज किया है, 2%, क्योंकि मैंने कैलकुलेट किया था पिछले वाले पार्ट में, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर मशीनरी, एंड इसके लिए मैंने 20% यूज किया है, स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर मशीनरी, एंड RBM फॉर मोटर व्हीकल्स, एंड अगेन दिस इज ऑल्सो 20%, ठीक है। ये मैं आप लोगों को बता दूं कि हमें ये यूज करना पड़ेगा। अच्छा, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग्स एट द एंड ऑफ द ईयर इज 3000, सो 3000 का हमें निकालना पड़ेगा 2%, जिसका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा, $60 आ जाएगा इसका आंसर, बेसिकली 60,000। तो चार्ज फॉर द ईयर फॉर buildings is 60, क्योंकि cost of buildings is at the end of the year is 3,000, and 3,000 multiplied by 2%, and then they have said no full year's depreciation in the year of purchase, so we don't have to think कि कितने महीने की चार्ज करेंगे, हम पूरी चार्ज करेंगे पूरे साल की। तो पुराने वाले 2000 कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग्स, नए वाले 1000 कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग्स, दोनों को मिला के 3000 की कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग मल्टीप्लाइड बाय 2% विल गिव मी $60 एज माय चार्ज फॉर द ईयर। डिस्पोजल में डैश लगा देंगे क्योंकि कोई डिस्पोजल नहीं हुआ है, तो बैलेंस कैरिड डाउन फॉर द बिल्डिंग्स की डिप्रिसिएशन का बैलेंस कैरिड डाउन विल बी $180, ठीक है। सो दिस वाज इजी। For machinery, okay, so now we have to use our brain for some machinery
थिंग। ओके, मशीनरी के लिए पुरानी वाली मशीनरी हमारे पास 2000 थी, नई वाली मशीनरी जो हमने ख़रीदी है वो है 720 की, और एक हमने डिस्पोज ऑफ की है। कॉस्ट ऑफ द डिस्पोज्ड ऑफ मशीनरी was 160। तो इसका मतलब 2560, तो बेसिकली हम 2000 पे और 2000 प्लस 720 माइनस 160 पे बेसिकली हम 20% चार्ज कर देंगे। तो 2560 का जब हम 20% निकालेंगे तो इसका क्या आंसर आता है? 2560 मल्टीप्लाइड बाय 20%। 1 सेकेंड, 2560 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 is going to give me 512। This is simple, straightforward। बेसिकली जो आपने पुराने नॉन करंट एसेट्स थे उसमें से हमने 160 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि वो अब हमारा नॉन करंट एसेट नहीं है, तो उसकी कॉस्ट पे हम डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे ना, उस पर हम स्ट्रेट लाइन मेथड डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, बिकॉज नो डिप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल। ये पॉलिसी है ना, नो डिप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल। एंड जो 720 का नया खरीदा है उस पर चार्ज कर देंगे। तो वी यू नो बेसिकली यू आर चार्जिंग डिप्रिसिएशन on the remaining non-current assets, which remaining older non-current assets and the new non-current asset, that is for 720। तो 512 इसका आंसर आ गया। तो इसको हम लिख देंगे 512 चार्ज फॉर द ईयर, यहाँ लिख देंगे 512 फॉर डिस्पोजल। अगेन जो मशीनरी हमने डिस्पोज ऑफ की थी, इन्होंने हमें बताया था कि हमने वो 1 दिसंबर 2011 को ख़रीदी थी। तो इसका मतलब 2011 में हमारा वो साल शुरू हुआ था, राइट? तो फर्स्ट ईयर फॉर द डिस्पोज्ड ऑफ मशीनरी, मशीनरी है ना, ये मशीनरी है। तो फर्स्ट ईयर फॉर द डिस्पोज ऑफ मशीनरी वाज 1 जून 2011 टू 31 मई 2012। ये बेसिकली इसका फर्स्ट ईयर था। फिर सेकेंड ईयर इसका था 1 जून 2012 टू 31 मई 2013। ये इसका सेकेंड ईयर था। और द थर्ड ईयर इज 1 जून 2013 टू 31 मई 2014। और इस साल में बेसिकली हम हैं। So this is the year of disposal. So we are not supposed to dispose the charge depreciation in the year of disposal, but this we have been using this for 2 years in the past। तो इसका मतलब हम इसको कितना depreciate कर चुके थे। यहाँ पे हमें disposals के लिए accumulated depreciation लिखनी पड़ेगी on the disposed of non-current asset। अभी मैं आपको एक टी अकाउंट के फॉर्म में भी बताती हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको डिस्पोजल के लिए accumulated depreciation लिखनी पड़ेगी। तो अगर हम निकालें 160 was the cost of the non-current asset multiplied by 20% फर्स्ट ईयर में किया होगा, फिर 160 अगेन multiplied by 20% सेकेंड ईयर में किया होगा। तो इसकी टोटल डिप्रिसिएशन कितनी आई होगी? एक सेकेंड, टोटल डिप्रिसिएशन इसकी आई होगी 32 in the first year, 32 in the second year, so that means 64 was the total depreciation of the disposed of machinery। तो मैं यहाँ से 64 माइनस करूँगी। अगर आप लोग इसको टी अकाउंट के फॉर्मेट में थोड़ा समझने की कोशिश करें तो accumulated depreciation at the start of the year जो मशीनरी की थी वो कितनी थी? 800 थी accumulated depreciation at the start of the year। फिर हमने ड्यूरिंग द ईयर जो है वो इनकम स्टेटमेंट, बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पे हमने चार्ज किया 512। और डिस्पोजल बेसिकली आएगा इसका, डिस्पोजल कितना आएगा? डिस्पोजल आएगा 64, टोटल डिप्रिसिएशन ऑन द डिस्पोज्ड ऑफ नॉन करंट एसेट। सो दिस इज बेसिकली प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मशीनरी कि टी अकाउंट फॉर्मेट में अगर आप देखें तो ऐसे ही लगेगा। तो 800 प्लस 512 माइनस 64 गिव्स मी बैलेंस कैरिड डाउन ना। तो ये बैलेंस कैरिड डाउन मेरा आ जाएगा इधर 1248, 1248। अब हमारे पास जो है चार्ज फॉर द ईयर फॉर द motor vehicles। So for motor vehicles you have to think a bit कि cost of motor vehicles at the start of the year was 700। ड्यूरिंग द ईयर हमने नए जो है वो 200 के ख़रीदे हैं, एंड जो हमने बेचा है वो 100 का बेचा है, एंड देन you have 800 as the cost of motor vehicles at the end of the year। लेकिन इसके लिए हमें जो है वो थोड़ा सा कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। 700 was the cost of motor vehicles at start and total depreciation at the start of the year was 300 ना।
300 टोटल डेप्रिसिएशन एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर है, यहाँ दी हुई है 300। सो 300 यहाँ टोटल डेप्रिसिएशन एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर दी हुई है। टोटल डेप्रिसिएशन, अच्छा इसमें से हमने एक नॉन करंट एसेट बेचा तो उसकी कॉस्ट थी 100 और हमने उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 40, तो कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग एसेट हो गया 600 एंड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ रिमेनिंग एसेट्स हो गया 260। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20% से, क्योंकि अभी हमें फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन multiplied by rate, right? So cost of remaining assets 600, accumulated depreciation of the remaining assets 260 multiplied by 20%। क्योंकि देखिए जो नॉन करंट एसेट हमने डिस्पोज ऑफ कर दिया उस पर हम डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज कर सकते इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, तो इसीलिए मैंने कॉस्ट से कॉस्ट रिमूव किए और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिमूव किए उस नॉन करंट एसेट की जो हमने बेच दिया है। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि accumulated depreciation of that non-current asset which we have sold was $40। सही है, तो ये हमने डिस्कस किया था। सो दैट मीन्स इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 68 डॉलर्स होगी चार्ज ऑन द ओल्ड मोटर व्हीकल्स एंड ऑन द न्यू मोटर व्हीकल। जो न्यू मोटर व्हीकल खरीदी हमने उसकी कॉस्ट 200 है, न्यू मोटर व्हीकल की कॉस्ट 200 है। तो पहले साल में क्योंकि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 0 होती है, कॉस्ट इज 200 माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज 0 मल्टीप्लाइड बाय 20% करेंगे तो इसका आंसर आएगा 40। तो 40 प्लस 68 इज गोइंग टू गिव मी 108। 108 इज द charge for the current year for motor vehicles। तो यहाँ लिखूंगी मैं 108 charge for the current year for motor vehicles। जो disposed of non current asset है उसकी तो accumulated depreciation 40 थी, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 300 plus 108 that is 408 minus 40 is going to give me 368। yes, so now when I do the row totals, तो पहले हम charge for the year का row total करेंगे, तो row total इसका आएगा 680। yes, and for the disposals total 64 plus 40 is going to give me 104 ना, 104 यहाँ से हम माइनस करेंगे। and for the total of balance carried down, balance at 31st May 2014, 180 plus 1248 plus 368 is going to give me 1796। एंड देन नेट बुक वैल्यू बहुत आसान है। नेट बुक वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग्स इज 3000 at 31st May 2014। Total depreciation at 31st May 2014 is 180. So 3000 minus 180 gives me 2820। सही है। For the machinery case 2560 cost of machinery at the end of at 31st May 2014। Total depreciation at 31st May 2014 is 1248। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1312। and for motor vehicles 800 minus 368 which is going to give me 432। और फिर जब हम 432 अच्छा 432 और फिर जब हम इस रो को भी ऐड करेंगे so 2820 plus 1312 plus 432 is going to give me 4564। yes, that is my net book value at 31st May 2014। और नेट बुक वैल्यू एट 31st May 2013 तो सवाल में दी हुई थी शुरू में, ठीक है, सवाल में दी हुई थी नेट बुक वैल्यू एट द स्टार्ट विच वाज 3480 टोटल, मतलब बिल्डिंग्स प्लस मशीनरी प्लस मोटर व्हीकल्स विच वाज 3480। ओके, so I hope this helps you। this was one of the AS level questions। do let me know if this helps you। Thank you so much for watching।